The frigid winter weather is in fact refusing to give the residents of northern India a break from fog. With the minimum temperature in the national capital hovering around 7 degrees Celsius, the IMD now has predicted fresh trouble for North India. Several flights operations in Delhi has also been hit owing to the weather conditions. The IMD further reiterated that a fresh western disturbance is expected to bring extensive rainfall to Delhi and its bordering states in North India until Monday, February 5. And under its spell, several regions such as Haryana, Delhi, Punjab and Rajasthan will be receiving heavy rainfall and hailstorms, while Uttar Pradesh could see the same tomorrow and day after. Now, according to the IMD, isolated hailstorms are also expected over Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan and Madhya Pradesh as well. So those are the weather details coming in. The frigid weather is refusing to give any respite to the residents of North India in terms of the fog and the rains. And this, in fact, coming in with the minimum temperature in the national capital, specifically hovering around 7 degrees Celsius. Now, the IMD also predicting fresh trouble with the flights operations already in Delhi being hit and rainfall as well because of fresh western disturbance. And extensive rainfall is being predicted for Delhi and its bordering states until 5th of Feb. And we had also seen rain lashing parts of Delhi-NCR this morning as well. And under its spell, several regions such as Haryana, Delhi, Punjab and Rajasthan will be receiving heavy rainfall and hailstorms as well, while Uttar Pradesh could see same tomorrow and the day after. Several flights and trains have been hit, as we can see in national capital. Firstly, it was the fog and the smog, and now it is the rain that is in fact lashing parts of the national capital. And this frigid weather refuses to go and give any respite to the residents in North India. The temperature currently in Delhi is around 7 degrees Celsius, with the IMD predicting fresh trouble for the northern India because of western disturbance expected to bring extensive rainfall to Delhi and the bordering states, which include Haryana, Punjab, Rajasthan as well. Also, isolated hailstorm is expected over Jammu and Kashmir, in Himachal Pradesh, in Uttarakhand and in Rajasthan, in fact in Madhya Pradesh as well. My colleague Bhavna is joining us live on the broadcast to give us all the details on this. Bhavna, over to you. Bring us the updates that you're gathering from the ground in terms of the weather. बिल्कुल, अगर बात करें आज की तो राजधानी दिल्ली में कल रात से बारिश हो रही है और पिछले कुछ दिन पहले भी तस्वीरें इसी तरह से थी कि झमाझम बारिश हो रही थी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 5 फरवरी तक इसी तरह से बारिश की तस्वीर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगी। जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, इसका खासा असर आसपास के इलाकों में दिख रहा है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो या फिर उत्तर भारत हो, सभी जगहों पर रुक रुक कर बारिश की तस्वीर देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर तापमान की बात करें तो आज सुबह राजधानी दिल्ली में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जिसमें कल के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि जो मैक्सिमम तापमान है वो दिन के वक्त 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी जरूर देखी जा रही है, लेकिन मौसम पूरी तरह से राजधानी दिल्ली का सुबह बदल चुका है, जहां पर एक तरफ बारिश की तस्वीर है और वहीं दूसरी तरफ अगर बताएं आपको सुबह की कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि हल्के जो बादल है वो छाए रहेंगे और इसके साथ ही थोड़ा अंधेरा सा आपको सड़कों पर नजर आ रहा होगा। और इसी तरह से अमूमन एनसीआर की अगर बात करें, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सभी जगह इसी तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज सुबह बारिश की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल 5 फरवरी तक अनुमान है मौसम विभाग का कि बारिश इसी तरह से रुक रुक कर होगी। जी।